कोई खास ओकेजन है क्या आज? आज तो जुमा भी नहीं है भाई। आप पूरा बिल्कुल एकदम ऐसे बैठे हैं एक बिल्कुल। फंक्शन था। अच्छा, एक फंक्शन था। That's fine. फंक्शन था। Sir, could you tell the last topic we did? In the last class में Yeah. हम लोगों ने क्या था, गिफ्ट, ये सॉरी, नस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Equilibrium constant. Okay. एग्जाम्स हो गए आपके? Sorry, sir. एग्जाम्स हो गए आपके? जी sir. Guys, I'm just waiting. Why are your cameras not on? Safia, Deborah, please turn your cameras on. Please write this question. Yes, waiting for Safia, Fadil. Safia is not here. Safia कहाँ चली गई? Fadil, cameras. Fadil, आप last class में थे? Were you present in the last class? Fadil? Fadil is not here, it seems. Guys, acha, also, please raise your hand if you don't know how to do this, okay? Raise your hand if you don't know how to do this in the chat. Safia, your camera is not on. Fadil, your camera is not on. Yusuf, आप last class में थे क्या? No, sir. अच्छा, ठीक है, no problem. Then you will just wait, okay? This is for those who are present in the last lecture, तभी उनको समझ में आएगा. You will calculate the E0 cell using these values.
First of all, identify what is happening with nickel oxidation reduction. Ag में क्या हो रहा है oxidation reduction. Then number of electron. Then once you get the E naught, you can calculate the delta G naught as well as log Kc. है ना? दोनों के लिए we need only E naught cell. I will give you guys 3 more minutes. Okay, Fia. कुछ तो गलती है फिया. E naught cell कितना आ रहा है आपको? What is the E naught cell that you have got? कहाँ कैलकुलेट किया आपने? फिया, Sir, where did you actually I minus 0.80 minus 0.25. I subtracted it. नहीं नहीं, कहाँ किया है? लेकिन आपने कैलकुलेट करना चाहिए ना, आपको दिख ही नहीं रहा कहीं. Show me the process ना, how you have done E naught. E naught cell कैसे निकाला है आपने? Okay, guys, time is over. Please send me whatever you have done till now. Deborah, please send me whatever you have done. भैया, आप बताएंगे आपने E naught cell कैसे निकाला? Yes, Fia. Yes, sir. How did you calculate the E naught cell? Can you write and show me on the and then send on WhatsApp? Actually, I minused it, sir. I अरे वो नहीं, subtracted it. अरे आप जो कैसे निकलेगा, क्या होगा वो जो किया आपने, वो प्लीज हमको कॉपी में लिख के बताइए. No, I directly minused it. 0.80 minus 0.25. अरे भाई, E naught cell का फॉर्मूला होता है ना, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला, राइट?
Yes. डायरेक्टली माइनस कर रही है तो मतलब आप मर्जी नहीं चल रही है ना अपनी, दैट जो मर्जी आए करते जाएंगे. यू गेट मी फिया? Yes, sir. So you write E naught cell is equal to what is the formula? Then see, आपको फॉर्मूला पता है फिया? Yes, sir. तो फिर बाकी लोग जल्दी भेजो यार. Deborah, please send me whatever you have done. Deborah, please send me whatever you have done. Sir, actually you can calculate like E naught cell is equal to E cathode minus E anode, right? Yeah, correct. That's what I did, right? No, you send me what you have done. If you have done something, you show it to me. So I should add it. Sorry, sir. यार उसको लिखो फिया, ठीक है? मेंटली प्लीज मत करिए. ओके फिया? Yes, sir. नो डेबोरा. 0.80. अरे यार देखिए इधर using the अरे guys please keep your pens aside. Listen here. You have E naught cell. यहां से कैलकुलेट होगा. ठीक है? What is the reaction happening? What is happening with nickel? Tell me. Keep your mic on, guys. Sir, All of you. is it 1.05? जी जी. Now you guys will answer me. Okay. What is happening to nickel? Fia, please look at the screen. Leave your pen aside. What is happening to nickel? Oxidation or reduction? अरे Oxidation. बोलो. Oxidation. What about Ag? What is happening? Reduction. Reduction. So this is what nickel is anode and Ag is cathode. Clear, guys? Yes, sir. Okay. So E naught cell will be equal to whatever the E naught of cathode minus whatever the E naught of anode. E naught of cathode is given as 0.80. 0.80 minus E naught of cathode, sorry, E naught of anode. Anode is minus 0.25. 0.25. So this will be equal to 0.80 plus 0.25. This will be equal to 1.05 volts. Now, the number of electrons that we have here, it is equal to 2. I said charge into stoichiometric coefficient for any of the ions. Charge plus into stoichiometric coefficient. 1 into 2 is 2. 2 into stoichiometric coefficient 1 है. क्या जाएगा? 2 into 1 is also equal to 2, right? So number of electron it is equal to 2. Now please see. E naught cell आ गया. What is delta G? Delta G का फॉर्मूला होता है minus NF E naught of cell. What is the N? N is equal to 2 multiplied by 96500 multiplied by 1.05. Now, if you are going to multiply this number, I think यहां तक सफिया आपका ठीक है. 2 into minus होगा. My bad, huh? 96500 multiplied by 1.05. This will be equal to minus 202650 joule per mole. ठीक है? Joules per mole. And you can write this as minus 202.65 kilojoule per mole. Is that clear? Yes or no? Please tell me. This is delta G naught. Yes, sir. Okay. Now, what is the log Kc? log Kc के लिए फॉर्मूला होता है n into फिया स्क्रीन पे देखिए, लिखिए मत प्लीज. E naught cell divide by what? बोलो भाई. 0.0591. 0.0591. N is equal to 2. E naught cell 1.05 divided by 0.0591. Calculate this value. You will get it as 2 into 1.05 divided by 0.0591 is equal to 35.5. 35.5. This is log Kc. Please copy this down. Raise your hand once you're done.
Please raise your hand once you're done. Fadil, Assalamu alaikum. Fadil, am I audible? Fadil, are you here? यार ये फादिल को पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में. 2 दिन क्लास करेंगे फिर उसके बाद क्लास में नहीं करते. Okay, Deborah, waiting for you. हेलो सर. हाँ जी बताएं. क्या भाई सर जी. कर रहे हैं आप? यस सर, आई वाज हियर व्हेन आई जॉइंड. मेरा जूम क्रैश हो गया था सर. फिर उसके बाद अभी हम इतना फादिल फादिल कर रहे थे. कहाँ थे आप? यस सर, यू वर कॉलिंग मी. सर अभी भी माय नेट इजंट वर्किंग वेल सर, इसलिए वीडियो भी नहीं खोला है सर. अच्छा जी ठीक है. यस. तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत तो ठीक है सर. तबीयत ठीक है. लास्ट क्लास में थे आप? यस आई वाज देयर लास्ट क्लास. चलिए ठीक है. ओके गाइस यू कैन लोअर योर हैंड. गाइस यू कैन लोअर योर हैंड. ठीक है यूसुफ, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा. ठीक है, यू आर नॉट प्रेजेंट इन द लास्ट लेक्चर नो. You'll understand from here. Okay, so write the topic electrolytic cell. Please write the cell in which electrical energy is used. Cell in which electrical energy is used to bring about a non-spontaneous reaction. Non-spontaneous reaction is called electrolytic cell. So in electrolytic cell, what happens? Electrical energy is used and it is converted to chemical energy. Is converted to chemical energy. Chemical energy का मतलब होता है रिएक्शन का होना. ठीक है, बाय डेफिनेशन ही केमिकल एनर्जी का क्या मतलब हुआ? रिएक्शन का होना. जैसे काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ? मोशन. इफ आई से काइनेटिक एनर्जी तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? मोशन. केमिकल एनर्जी मतलब क्या आना चाहिए? केमिकल रिएक्शन. इज दैट क्लियर? यस और नो प्लीज टेल मी गाइस. याद है? ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए. ठीक है, प्लीज सी, डोंट राइट एनीथिंग. आपको लिखने की अभी कोई भी जरूरत नहीं है. ठीक है, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, जस्ट सी. उसके बाद में आप लोग लिखिएगा. ठीक है,
Tell me, this red electrode, this will have what kind of charge? Positive charge होगा इस पे या negative charge होगा? ये बैटरी है आपके पास, आपको समझ आ रहा है ना? This is your battery. बैटरी से एक पॉजिटिव टर्मिनल से तार निकल रहा है, दैट इज अटैच्ड ऑन दी रेड इलेक्ट्रोड. नाउ टेल मी, दिस रेड इलेक्ट्रोड विल हैव पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? बोलो भाई. Negative charge. Charge. Anyone else? Positive charge. What about other guys? चैट में करें भाई, जरा चैट में देखते हैं. पॉजिटिव चार्ज वाले हैंड रेज करें. पॉजिटिव चार्ज. Those who think the answer is positive charge, raise your hand. पॉजिटिव चार्ज वाले हैंड रेज करें. Priya, why do you think it is negative charge? So it's like anode will like positive polarity will have negative charge and negative polarity will have positive charge. So I think it will have negative charge for the positive polarity. नहीं नहीं, तो पॉजिटिव जो टर्मिनल है तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा. But that is there, right? Like positive polarity, हाँ. anions will be there. Negative And- polarity, cations will be नहीं, there. ये अनायन तो है ही नहीं अभी. अनायंस कहाँ से आ गए? अभी तो हमने बैटरी लगाई है बस, Yes, sir. है ना? तो ये पॉजिटिव वाला एंड जो है, ये दिस होल थिंग विल बी पॉजिटिव ओनली ना. ये पूरा का पूरा पार्ट जो होगा आपका, वेट अ सेकंड, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हार्श व्हाइट स्क्रीन होने वाला है, तो जस्ट टेलिंग यू गाइस. ठीक है, तो दिस होल थिंग विल बी पॉजिटिवली चार्ज, राइट? यस और नो? Yes, हम्म. sir. Yes. ठीक है, तो दिस विल बी पॉजिटिवली चार्ज, करेक्ट. तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिवली चार्ज हुई है रेड. और थोड़ा सा शायद आपने अगर 10th में पढ़ा होगा, तो लाइव वायर जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, वो किससे होता है? रेड कलर से इंसुलेटेड होता है, राइट? ग्रीन जनरली अर्थ वायर होता है, बट मतलब उसको दिखाने के लिए वी कैन यूज ब्राउन. ब्लैक होता है न्यूट्रल या फिर नेगेटिव वाला जो होता है, जिसको न्यूट्रल बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली इन ब्लैक. बट वो ब्लैक दिखाएंगे तो कुछ दिखेगा नहीं आप लोग को, है ना? दैट इज आई हैव टेकन दिस एज ग्रीन. ओके, सो प्लीज सी. नाउ आई एम गोइंग टू पुट cations and anions. Okay, आप जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट डालिएगा, फॉर एग्जांपल इफ यू आर एडिंग NaCl, then it will be dissociate into Na plus and Cl negative. Correct, guys? It will dissociate into Na positive and Cl negative, right? Yes or no? ठीक है. So whenever you are going to add an electrolyte, it will get converted into positives and negatives. आपको कुछ पॉजिटिवली चार्ज मिलेंगे और कुछ नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे, राइट? पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. ठीक है, इस तरह से कुछ कुछ मिलेगा आपको. नाउ as soon as you will switch on the battery, जैसे आप बैटरी को ऑन करेंगे, so you know that what is going to happen. यहाँ पे आपके पास all these positive charge will rush towards the negative charge because opposites attract each other, right? Opposite charges attract each other. यहाँ green वाले में negative charge develop होगा ना, because it is connected to the negative terminal. So all the positives are going to rush towards the green वाला, यानी कि negative terminal की तरफ, and all the negative anions, they will rush towards the, किधर रश करेंगे वो? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. करेक्ट है गाइस? सुनो प्लीज टेल मी. सही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब सुनिए जरा, अगर नेगेटिव दौड़ के जा रहा है पॉजिटिव के पास, नेगेटिव किधर जा रहा है दौड़ के? बोलो भाई. नेगेटिव इज गोइंग टुवर्ड्स, Positive. बोलो. हाँ, नेगेटिव जा रहा है पॉजिटिव के पास, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. Yes, sir. अच्छा, और अगर नेगेटिव जा रहा है पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव जा रहा है, दोनों चीज क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगी. करेक्ट है? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान दीजिए. आई एम गोइंग टू राइट अ फ्यू थिंग्स. अच्छा, इसको बना लीजिए जरा, इसको बना लीजिए. अच्छा, उससे पहले एक सेकंड.
पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव जाके न्यूट्रलाइज हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव जाके न्यूट्रलाइज हो रहा है, दैट मीन जीरो चार्ज। सो इसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन से जीरो होना। उसी तरह नेगेटिव जा रहा है और जीरो हो जा रहा है, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। क्या ख्याल है, टेल मी गाइस। पॉजिटिव से जीरो, जैसे आपके पास Na+ था और सोडियम बन गया, Na+ टू सोडियम, और यहाँ पे आपके पास Cl नेगेटिव था और यहाँ पे Cl2 बन गया, ठीक है। सो राइट नाउ इट इज हैविंग जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे नेगेटिव था, तो नेगेटिव से जीरो ऑक्सीडेशन, और पॉजिटिव से जीरो रिडक्शन नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल Zn2 पॉजिटिव से Zn, क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन। रिडक्शन ना। तो वैसे ही मतलब जनरली क्या बोलेंगे, पॉजिटिव से जीरो जा रहा है, राइट, सो इट इज रिडक्शन, गॉट इट ना। सो इसी तरह से नेगेटिव से जीरो जाने को क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। इज दिस क्लियर, यस और नो प्लीज टेल मी। यस। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान Yes, दीजिए, sir. ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आपको क्या बोला हमने, पॉजिटिव जिधर जा रहा है उधर जीरो है ना, दिस इज रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड, ठीक है। नेगेटिव जिधर जा रहा है जीरो, उधर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड। सो पॉजिटिव जिधर जा रहा है दिस विल बी कैथोड, और नेगेटिव जिस तरफ भाग भाग के जा रहा है उसको क्या बोल देंगे, एनोड। क्लियर है कहीं, यस और नो प्लीज टेल मी। यस सर। ठीक है, नाउ मेक दिस होल थिंग, ये सेल बना लीजिए जरा। Raise your hand once you're done, guys. If you're done drawing this, please raise your hand. लिखना बाकी है अभी। So in electrolytes, will the anode always have positive charge in electrolytes? Hi, anode always have positive charge. नहीं भाई, पोलैरिटी जो होती है ना वो डिपेंड करता है असल में। इफ यू लुक एट, अगर आप ये देखें, देखिए एनोड और कैथोड के बारे में बता रहे हैं। एनोड वेयर ऑक्सीडेशन हैपन, कैथोड वहां जहां पे रिडक्शन हो रहा है। बेसिक डेफिनेशन यही है, ठीक है। चलिए, सो प्लीज राइट हियर, कैथोड को थोड़ा सा हम इधर मिटा देते हैं। ऑल ऑफ यू डन ना। ध्यान दीजिए, प्लीज लिखिएगा। When electrolytes are dissolved in water, or when they are in
molten state, when they are in molten state, then they split into ions. Then they split into ions. Right, next, on passing current, they are attracted towards oppositely charged electrode. Next, anions reach the positive terminal or positive electrode and get neutralized. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑक्सीडाइज्ड. Therefore, positive electrode is labeled as anode. ठीक है? Is labeled as anode. Next, you write cations reach the negative electrode and get neutralized. And just a second, guys. Cations reach the negative electrode and get neutralized. Okay, get neutralized. That means cation से क्या हो जाएगा? Reduction. Therefore, negative electrode is labeled cathode. ठीक है, तो आप प्लीज ना इसको ऐसे मत रखिएगा कि ये मत याद रखिएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें उल्टा होता है चीज. ठीक है ना? बट क्या चीज कांस्टेंट? व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन. ये चीज वहां भी हो रही थी. आई होप आप लोग को याद होगा, है ना? वहां पे भी यही चीज, एनोड में ऑक्सीडेशन और कैथोड में रिडक्शन. ठीक है ना? राइट, नेक्स्ट. राइट, नेक्स्ट. ठीक है, तो लिखिएगा मूवमेंट ऑफ cation and anion is called electrolytic conductance, and the change is known as primary change. ठीक है, उसके बाद लिखिए जरा since non-spontaneous reaction occurs in an electrolytic cell, hence delta G
is equal to positive, या फिर डेल्टा जी नॉट कर लीजिए, डेल्टा जी नॉट इज पॉजिटिव एंड ई नॉट सेल इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है ना। तो डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 0 एंड ई नॉट सेल, नॉट हटा दीजिए, आप जनरली लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं नॉट के केस में, जनरली आप लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा जी, ठीक है, एंड ई सेल इज लेस देन 0, ठीक है, नॉट हटा दीजिए प्लीज। देन splitting of a compound using electricity is called electrolysis. Raise your hand if you're done writing. Waiting for Fadil and Mir Hussain. Mir Hussain तो absent रहता है. Waiting for Fadil. Okay, you can lower your hands now. ठीक है. और जरा माइक ऑन कर लें प्लीज. Please turn your mics on, guys. Please turn your mics on. ठीक है. अब जरा यहाँ पे बताएं. When I am going to talk about electrolysis, तो वहां पे दो चीजें हम लोग देखते हैं. हाँ फादिल, नो प्रॉब्लम, अगर आप नहीं ऑन कर सकते तो देखिए दो चीजें देखते हैं. क्या देखते हैं सबसे पहले तो, एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्या बोलते हैं इसको? क्वालिटेटिव एनालिसिस. कि when we are having a electrolytic cell, what product will be formed? What product will be formed, है ना. जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और उसका रिडक्शन होगा, तब क्या मिलेगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, है ना. उसी तरह से सिमिलरली जब नेगेटिव आयंस, व्हेन द एनायंस विल गो टुवर्ड्स द एनोड, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. एक तो ये एनालिसिस करना है हम लोगों को, ठीक है. दूसरी चीज जो देखनी है हमें, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्या देखनी है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस. एक तो क्या बनेगा क्वालिटेटिव, एंड क्वांटिटेटिव में देखेंगे हाउ मच इट विल बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मच प्रोडक्ट, ठीक है, कितना मिलेगा आपको. दो चीजें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको दो चीज देखना है. वन इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस, व्हाट प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म. अगला है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म. तो ये टॉपिक देखिए, ऐसे बच्चे जो होते हैं जिनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा रहता है, उनको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम हियर. क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप रट सकते हैं, यू हैव टू मेमोराइज, देयर इज नथिंग एल्स. In qualitative analysis, you will have to memorize. We will study almost 8 type of different cells, and in those cells you have to memorize what are the products. ठीक है. You will obviously there will be a pattern to the products, but हाँ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है. So ये आपका थोड़ा सा memorization वाला पार्ट यहाँ पे, लेकिन फिर भी you will have memorization, ठीक है. आपको दिक्कत ज्यादा नहीं होने वाली है, ठीक है. दिक्कत ज्यादा नहीं होगी, वो पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न आप खुद रिकॉग्नाइज कर लेंगे, एंड देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई. इन दिस केस इट इज अ बिट कंसेप्चुअल, लेकिन हाँ जी, लेकिन इफ यू हैव डन दिस इन योर स्कूल, और अगर आपकी स्कूल में प्रॉब्लम हुई है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, ये मेरी गारंटी है कि मैथ जिनका नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है. नहीं, इसके लिए तो बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं आप. फॉर दी क्वांटिटेटिव एनालिसिस इतना आसान कर दिया है हमने. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विल टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एनालिसिस. इस क्लास में हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस देखेंगे, ठीक है. बट ये आप लोगों से गुजारिश है कि इन द नेक्स्ट क्लास आप लोग प्लीज टाइम से आएंगे, बिल्कुल, ठीक है. वाइज क्लास खत्म नहीं हो रही है ना. वो मेरे लेक्चर से ऐसा लग रहा है खुतबा खत्म हो रहा है, खुतबा भी खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है. ध्यान दीजिए.
बट प्लीज अभी हम बता दे रहे हैं आप लोगों को दैट बी ऑन टाइम, बिकॉज इनिशियली 2 फॉर्मूले बताएंगे हम, उसी से सारे सवाल हो जाएंगे। ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चन, ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बाकी जहां से भी सवाल आए सारे के सारे सवाल 2 फॉर्मूले से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आप स्टार्टिंग में ही लेट आइएगा तो फिर हम क्या करते रहेंगे, आई विल बी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, फिर आपके ऐसे बाउंसर जाता जाएगा सीधा, ठीक है ना। चलिए, सो विल टॉक अबाउट क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब ध्यान से सुनिएगा जरा और बताइए हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में व्हाट प्रोडक्ट, व्हाट की बात तब आएगी ना। सुनिए 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 सुनिए, इफ यू हैव ओनली ए पॉजिटिव, इफ यू हैव ओनली ए पॉजिटिव कटायन, क्या कटायन है हमारे पास, व्हाट इज द कटायन, बोलो भाई। ये पॉजिटिव। तो ये भाग के जाएगा किधर, कैथोड के पास, और ये क्या बना देगा, ए पॉजिटिव से ए बन जाएगा, कोई एक ही एलिमेंट तो बनेगा, बात सही है ना। अरे सही है, ठीक है। Yes, sir. इफ यू हैव ओनली वन कैटायन, इफ यू हैव ओनली वन कैटायन, तब तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन। इफ आई हैव ओनली वन कैटायन तो देयर इज नो confusion in the product, we will get only one product. But what if I have A positive and we have another cation that is B positive? Now both of these can go towards the cathode and A का A बन सकता है, B का B बन सकता है, but what will be preferred? सवाल क्या है, what will be बोलो भाई, what will be preferred? Preferred. कैसे पता चलेगा क्या प्रिफर होगा, क्या प्रेफर होगा, ठीक है। ए का क्या हो रहा है बताइए, ए का क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बी का क्या हो रहा है, Reduction. बी इज आल्सो गेटिंग रिड्यूस्ड, बी का भी रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ए इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बी इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो इफ आई कंपेयर ए एंड बी, इनमें से जो ज्यादा रिड्यूस होना चाहे दैट विल गेट रिड्यूस, कैन आई से दैट लॉजिकल है। ए बिल्कुल उछल चल के बोल रहा है हमको रिड्यूस होना है, ए सेइंग आई वांट टू गेट रिड्यूस, आई वांट टू गेट, सो व्हाट विल गेट रिड्यूस, टेल मी गाइस, ए विल गेट रिड्यूस्ड, है ना। अब ये Yes. चीज बताएगा कौन, ये चीज बताएगा कौन कि ए रिड्यूस होना ज्यादा चाह रहा है या बी रिड्यूस होना ज्यादा चाह रहा है। दिस विल बी टोल्ड बाय एसआरपी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए आपको दिया रहेगा, एसआरपी ऑफ बी दिया रहेगा, ठीक है ना। सो इन दोनों में से whoever is having हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल, जो ज्यादा रिड्यूस होना चाह रहा है, मान लीजिए इसका 10 है और बी का है आपके पास मान लीजिए 20, तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा, which is having B. higher reduction potential, B का. So what reaction will be preferred? This reaction will be preferred. Is that clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ध्यान दीजिए। उसी तरह से बिल्कुल, if I have let us suppose P negative, it will get neutralized and make P, oxidation हो रहा है, right? Yes. और आपके पास है Q negative. Q negative will make Q. So both of these. Now we have to compare what will be preferred. So if oxidation is happening, I have to see SOP of P ज्यादा है या फिर SOP of Q ज्यादा है। Correct guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. तो जिसका SOP ज्यादा that will be preferred. जिसका SOP ज्यादा that, but according to IUPAC, SOP तो दिया नहीं रहता है, क्या दिया रहता है हमेशा, SRP ना। तो आपको SRP दी रहेगी तो आपको क्या देखना पड़ेगा, whose SRP is Yes, lower, सही है। किसके लिए, Yes, sir. है ना, एनायंस के लिए क्या देखेंगे, whose SRP is lower, और कैटायंस के लिए क्या देखेंगे, whose SRP is higher. Is that clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, Clear sir. है? चलिए, Yes, ठीक sir. है। शुरू कीजिए लिखना। Sir, so Please. in the second one will be taking the higher SOP. SOP लेकिन दिया नहीं रहेगा, SRP की टर्म्स में बात करेंगे हम लोग, जी जी। For the anions, whoever is having higher oxidation potential will be oxidized, ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। सो राइट, यहाँ पे आपको लिखिएगा, जरा टॉपिक डालिए। देखिए यार, हम दोनों ही चीज करा देते हैं, आप लोग को समझा भी दिया, और ऐसा नहीं कि समझाने के बाद हम सीधा सवाल करा सकते हैं क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं, बट हम इतना लिखाते सिर्फ इसी वजह से ताकि आप लोग नोट्स को पढ़ें, है ना। अदरवाइज क्या ही फायदा, इतना समझ में तो आ गया आपको, है ना। इफ आई जस्ट स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चंस, आपको वो भी समझ में आने लगेगा, बट वो सिर्फ आज की क्लास तक के लिए होगा, ठीक है। ऐसा होता है ना कभी कभी मूवी में, आप मूवी देख रहे हैं, उस टाइम तो बड़ा लॉजिकल लगा आपको, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है ना, इवेंट्स का जो भी सीक्वेंस था वो सही लगा,
लेकिन बाद में ऐसे आप वापस आ रहे हैं कहीं से मॉल वॉल से, फिर सोच रहे नहीं यार उसको कैसे पता चला वहां पे बंदूक रखी थी, है ना। तो वो चीज हम नहीं करना चाहते। दैट यू हैव इट, आप पढ़िएगा जब तब भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्लीज राइट, प्लीज राइट जस्ट सेकेंड। हाँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस, qualitative analysis of electrolysis, or another heading for this topic can be products of electrolysis. ठीक है, प्लीज राइट the criteria for the formation of products during electrolysis depends on the following criteria, following factors कर लीजिए, following factors, ठीक है। नंबर 1 is the nature of electrolyte. Nature of electrolyte, क्या मतलब इसका? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि भाई अगर आप NaCl लेंगे तो आपको प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा, and if you are taking CaCl2 then you will get some different product. If you are taking AgNO3 then you will get some different product. So what is the electrolyte you are taking, that will determine, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, अरे बात समझ में आई? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये सुनो। Yes, sir. ओके, मोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, mode of electrolyte में we have two cases. Either I will take the molten state. Now what is difference here? Molten state और दूसरा है aqueous state, ठीक है, aqueous. If I am taking molten state, ध्यान सुन लीजिए जरा, if I am taking molten state तो हमने क्या लिया है, I have taken electrolyte and I have just melted it. उसमें हमने कुछ और चीज नहीं ऐड की, करेक्ट है गाइस, ये सुनो, I have just melted it, है ना, उसी का हमने क्या कर दिया, लिख सकता हूं, ओके। If I am taking aqueous state तो ध्यान रखिए, I have the electrolyte as well as water. I have the electrolyte as well as Water. है ना। तो यहाँ पे आपके पास when we have water molecules तो water में H plus OH negative दोनों ही होंगे. So H plus और cation में competition, OH negative and the anion of electrolyte में competition, ठीक है। So mode of electrolyte उस वजह से factor मतलब that is going to affect the formation of product, है ना, कि कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। थर्ड लिखेंगे nature of electrode. So there are some electrode which are inert. Inert का मतलब they are not going to take part in reaction. There are some metal which are active. So when we have active electrodes, they will take part in the reaction. Fourth is the concentration of solution. ठीक है। So slowly we will start doing the different type of cells, different types of electrolytes, और उसमें आपको समझ में आएगा how these factors are coming into effect. After that you will write some remarks. अब ये चीज वो है जो हमने समझी थी। सबसे पहला पॉइंट, if solution has only one cation or anion, then the formation मतलब कि prediction of product is straightforward.
उसमें आप लोगों को कुछ देखना नहीं, आपको देखना है कैटायन कौन है उसका आपको यूटिलाइज कर देना, एंड यू विल सी व्हाट इज द एनायन एंड देन यू विल यूटिलाइज इट. If solution contains as more than one cation or anion, then ऐसे ही कैटायन से स्टार्ट करते हैं. कैटायन with higher SRP and small size gets reduced. Second, anion with lower SRP and small size gets oxidized. ठीक है. अब देखिए सर ये स्मॉल साइज कहां से आया, तो उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए. लेट अस सपोज आपके पास है A पॉजिटिव एंड आपके पास है B पॉजिटिव. ठीक है. बट A पॉजिटिव काफी छोटा है और B पॉजिटिव बहुत बड़ा है. ठीक है. B पॉजिटिव इज वेरी लार्ज इन साइज. तो कौन ज्यादा आसानी से मूव कर पाएगा, जल्दी जल्दी कौन भागेगा, A या B? बोलो भाई. A भागेगा, है ना. A भागेगा और ये क्या बनाएगा, A बनाएगा, और B भागेगा तो क्या बनाएगा, B बनाएगा. ठीक है. लेट अस सपोज नाउ SRP की अगर हम बात करें, सो इसकी SRP है, लेट अस सपोज दिस इज SRP इज 12 वोल्ट मान लीजिए, और इसकी SRP है कंपेयर बहुत ज्यादा ये नहीं है, लेकिन B की है 15 वोल्ट्स. ठीक है. कंपेरेबल है. सही है ना. 12-15 सही है. कंपेरेबल है. ये सुनो गाइस. Yes, sir. ठीक है. बट ये ध्यान रखिएगा व्हेन वी टॉक अबाउट SRP ना, तो SRP उस चीज का मेजरमेंट है जब B पॉजिटिव और A पॉजिटिव दे हैव रीच्ड द इलेक्ट्रोड. उसके बाद ही तो हम लोग उसके बाद ही तो होगा ना. दिस SRP रिडक्शन पोटेंशियल तो तभी मेजर होगा जब ये पहुंच गए हो. करेक्ट है गाइस, है ना. अच्छा, ये रिएक्शन होने के लिए पहले पहुंचना तो पड़ेगा. करेक्ट है. पहले कौन पहुंचेगा, A पहले पहुंच जाएगा. ठीक है. अब ध्यान रखिए, अगर A और B, इफ A एंड B बोथ आर प्रेजेंट, तब तो B होगा, बिकॉज B का क्या है, SRP ज्यादा है. सही है ना. इफ A and B both are present at the electrode, if A and B both are present at the electrode, then जिसका higher SRP that will get reduced. Correct है guys? Yes or no? Please tell me. अरे हाँ या ना. Yes, sir. हाँ. ठीक है. अब मान लो B पहुंच ही नहीं पा रहा है, A पहुंचा हुआ है, तो A कहीं होगा ना. कहाँ कंपटीशन रहा फिर. बात समझ में आई. You understand how size come into play? Yes, sir. Yes. सफिया, आप कन्विंस नहीं लग रहे हैं. So can you repeat this point? ठीक है. ठीक है. आप माइक ऑन करके रखें. ठीक है. सुनिए जरा. आपको इतना समझ में आ रहा है, अगर साइज अभी हम हटा देते हैं, ठीक है, कौन सा रिएक्शन होगा, A या B? B. B will be preferred. Very good. मान लीजिए B पहुंच ही नहीं पा रहा है. B is so huge in size that A उसको ओवरटेक करके इलेक्ट्रोड पे कौन पहुंच रहा है? We have only A. क्या है आपके पास यहाँ पे? सिर्फ A है. A. B अभी पहुंच पा रहा है क्या? B नहीं पहुंच रहा. Why is B not reaching? Because B is having large size. ठीक है. ये समझ में आ रहा है ना. If it is having large size, so it will not be faster. It will not be moving faster. A will be moving faster. A will be reaching the electrode. और A का खटाखट क्या होता रहेगा? रिडक्शन होता रहेगा. Yes. बात समझ में आई? Yes, How sir. size comes into play? ठीक. चलो. You will write the first one. पहला हम लोग सेल देखने वाले हैं in which we are having molten NaCl with platinum electrode. With platinum electrode. अस्सलाम वालेकुम अलीजा. वालेकुम अस्सलाम सर. क्या हाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए. हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. आप सर सैयद डे में उधर गए थे क्या, खाने वाने, डिनर में? यस सर, गए थे. गए थे. और तबीयत खराब हुई? नहीं सर, वो बैन वालों की हुई थी. मैं बीबी फातिमा में गई थी. अच्छा, आप बीबी फातिमा में गए थे. यस अच्छा सर. अच्छा.
तो आप बच गए। अजीजुन्निसा में आई थी। सॉरी क्या क्या? सर वो दूसरे वाले अजीजुन्निसा, बच्चे गए थे फूड पॉइजनिंग। हाँ अजीजुन्निसा ना, क्या नाम है? अजीजुन्निसा, बेगम अजीजुन्निसा। बेगम अजीजुन्निसा। अच्छा अच्छा, आप वहां नहीं गए थे, क्या क्या खाया आप? सर कीमा, पनीर, बिरयानी, रोस्टेड और शाही टिक्का। रोस्ट, शाही टिक्का। शायद। तो ये सब जगह सेम ही बनता है क्या, सारे हॉल में लगभग? ना सर, गर्ल्स में ज्यादा वैरायटीज होती है, बॉयज में बस कौरमा और बिरयानी ओह, होती है। अरे भाई शाही टुकड़ा बनता है बॉयज में भी, ठीक है ना? हाँ सर, वो तो बनता है, जैसे उनकी तरफ रोस्टेड पनीर टिक्का रोस्ट, और दो तीन चीजें वो सब नहीं था। पनीर तो होगा यार, नहीं, मतलब पनीर जो टिक्का नहीं वेजिटेरियन, था। पनीर टिक्का नहीं होगा, लेकिन कुछ तो वेजिटेरियन रखेंगे ना। हाँ सर, पनीर टिक्का। नहीं नहीं, लड़कों में भी बोल रहे हैं हम। यस सर, लड़कों में तो था। आप लोगों को ना एक हम बात बताते हैं। एएमयू के अंदर उमर के फादर जो थे, हैं मतलब ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ एएमयू, राइट यूसुफ? उमर के अब्बा Yes, sir. My father too. आपकी, योर फादर टू, ओके ओके फाइन। तो कल, अच्छा तो आप लोग वहीं गए हुए थे क्या सर डे मनाने? जी सर. ओहो, आप तो नहीं देख पा रही हैं लीजा, ये पूरा ऐसे मतलब वो, ये तो सऊदी का थोप होता है, वो पहना हुआ है, ऊपर से बिश लगाया हुआ है, सब कुछ पूरा है ना ऐसे। मुझे पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये, क्लास करने ऐसे बिश टिश लगा के बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तो ससे दे के ही इसमें पार्टी में गए हुए थे आप? ओके नाइस। तो एक आपको जोक्स हंसी की बात बता दें, वहां पे जो गर्ल्स हॉस्टल है ना, वहां पे दे गिव एग्स इन द मॉर्निंग। ठीक है, सुबह में वो अंडे देते हैं खाने के लिए, एग्स, ब्रेकफास्ट में। कैन यू प्लीज आस्क मी लाइक व्हाट टाइप ऑफ एग? ऑमलेट देते होंगे, या फिर लाइक फ्राइड देते होंगे, राइट, या फिर बॉयल एग देते होंगे, करेक्ट? ऐसे ही कुछ देते होंगे ना? नहीं, तो गर्ल्स हॉस्टल में वो क्या करते हैं, गर्ल्स हॉस्टल में वो कच्चा अंडा दे देते हैं। बोलते हैं भाई आपको खाना है खाइए, लगाना है लगाइए। फिर लड़कियों का कोई भरोसा नहीं, that if you want to eat it you eat it, if you want to put it in the face or hair or somewhere else you can do that also। ठीक है, सो उनको ऐसे कच्चा अंडा दे दिया जाता है। क्या अलीजा, आप मतलब आप एमयू में थी 11, आप एमयू से कर रही हैं क्या आप? नो सर, नहीं, ऐसे ही। अच्छा, आपका डमी है ना? सिस्टर शी इन कॉलेज इन एमिया, तो उससे अच्छा, मेरी जुगाड़। अच्छा, उससे जुगाड़ है आपकी। अच्छा अच्छा, यस। सही है भाई। बाय द वे यूसुफ, उमर ने कहीं एडमिशन लिया? Yes, sir. कहाँ लिया उसने एडमिशन? Um, Vivekanand. विवेकानंद। अरे ये इंसान का नाम होता है भाई। कॉलेज का नाम है सर. कॉलेज तो भाई कहाँ है, कुछ तो बताओ आगे पीछे। रास्ता तो मुझे सही से पता नहीं, पर आई थिंक ½ का डिस्टेंस है एएमयू से. कहाँ? एएमयू से? अच्छा, यूपी में ही कहीं लिया उसने? हाँ, यूपी में ही. कैसा लग रहा है उसको इंडिया? 9 महीने हुए हैं अभी तो वैसे, पर हाँ, अब एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सऊदी से निकले हैं अभी 17 साल के बाद. ओह हाँ, यार वो तो करना ही पड़ेगा। आई मीन सऊदी में तो दिक्कत, मतलब उधर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में थोड़ी सी ये दिक्कत हो जाती है, दैट यू कैन नॉट स्टे आफ्टर योर वर्क परमिट इज ओवर, आई गेस, राइट? मतलब आपके अगर बच्चों का हो गया तो फिर ठीक है ना? नहीं, आप यहाँ पे रुक तो सकते हैं, पर यहाँ पे जो कॉलेजेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो अगर आपको नहीं अपनी नहीं, एजुकेशन कंटिन्यू करनी है तो आप इंडिया जा सकते हैं. no, not that, but like for example if someone has retired काम करने के बाद, यस सर. ठीक है, so can they stay in Saudi जब वर्क परमिट नहीं है उनके पास? आई थिंक नॉट. है ना? Some. हाँ, नहीं ना? बट इफ योर किड्स आर हैविंग सम, अगर आप बच्चे के पास आ गया वर्क परमिट तो देन यू कैन स्टे, आई गेस। या यू कैन से. हाँ, तो मतलब 100 दिन बस ये थोड़ी सी, मतलब या तो क्या बोलते हैं आपका, जनरेशन बाय जनरेशन आप किसी को काम पे लगाते रहो वहां पे, तब तो स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज वो देयर इज एक टेंशन हमेशा रहती है, इंडिया वापस जाना है, इंडिया वापस जाना है, वहां पे जो लोग रहते हैं, दैट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। सर चलिए सर, कर इधर देखते हैं, मोल्टेन NaCl विद पीटी इलेक्ट्रो। अलीजा यू आर सो लेट, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा बस पेशेंस बना के रखिए आप, आधे घंटे की क्लास बची है। ओके सर।
Sir, Okay. I've been trying to join since 9 o'clock, but there was some problem. That's why I couldn't join. आप 9 बजे ज्वाइन करना चाह रहे थे? अच्छा जी, 10 बज सर गए 9 आपको? बजे की तो क्लास है ना? हाँ हाँ, 9 बजे तो 1 घंटे लग गए ज्वाइन करने में आपको। यस सर। क्या भाई, क्या हो रहा है उधर? देखिए, ज्यादा हंगामा मत करने बोलिएगा वहां पे फिर आपका एएमयू की नहीं, फिर वो नेट वेट ऑफ कर देंगे, फिर आपकी क्लासेस नहीं हो पाएंगी, है ना लीजा? यस सर। देखिए, as platinum is inert, it won't take part in reaction. It won't take part in reaction. ठीक है ना? So first thing is that platinum is an inert electrode. ये चीज आपको यहाँ से पता चली. Whenever you have platinum, you will not include that in reaction. उसको आप ignore कर देंगे. And we know that NaCl is going to dissociate into Na positive and Cl negative and Cl negative. So the only electrolytes or the only ions that we are having is Na positive and Cl negative. So at cathode, what can happen? At cathode, only one reaction is possible, that is sodium positive will eat up electron and make sodium, है ना? सोडियम पॉजिटिव क्या करेगा? सोडियम सॉलिड बना देगा, ठीक है? एंड एट एनोड the Cl negative will get converted to Cl2 and give electron. If you want to balance this, it will be balanced like this, right? 2 electrons. अब आपको यहाँ पे addition subtraction करने की जरूरत नहीं है. You have just seen that in the anode I am getting chlorine gas, in the cathode I am getting sodium. So they will ask you what is the product of electrolysis or what is formed in the cathode, what is formed at the anode. तो बहुत आसान है. Products के लिए आप क्या लिखेंगे? Products sodium solid at cathode and Cl2 which is gas at anode. ठीक है? तो यहां तो कुछ भी परेशानी नहीं हो. अब देखिए सर, Cl नेगेटिव से Cl2 ही क्यों बना? सो वट एवर इज द एलिमेंटल स्टेट ऑफ दैट आयन, है ना? Cl नेगेटिव का एलिमेंटल स्टेट क्या है? क्लोरीन गैस, राइट? Cl कैसे मिलता है आपको दुनिया में? यू विल गेट Cl एज Cl2. सोडियम आपको कैसे मिलेगा दुनिया में? कंपाउंड किस तरह से मिलेगा? यू विल गेट सोडियम एज सोडियम सॉलिड, ठीक है? इन इट्स एलिमेंटल स्टेट बोलते हैं. जैसे हाइड्रोजन कैसे मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा आपको H2 के फॉर्म में. ऑक्सीजन कैसे मिलेगा आपको? O2 के फॉर्म में. गॉट दिस सेशन में प्लीज टेल मी गाइस. ठीक है, चलिए इसको जरा काम Yes, कीजिए. sir. रेज योर हैंड वंस यू आर डन. हाँ, लंबा चौड़ा मैसेज भेजा आपने अलीजा? आपने क्या क्या खाया यूसुफ सर सैयद डे में? आपका माइक ऑफ है. हाँ जी बताएं. पर वैसे तो कुछ नहीं खाया, बस ऐसी फंक्शन था. हैं? Yeah. खाली खाली भेज दिया आप लोगों को. Yeah. कौन है भाई उधर? दूसरी कैसी फंक्शन था? गैदरिंग. बस गैदरिंग थी, कुछ खिलाया नहीं यार. ऐसे मतलब एक तो यार मुसलमानों की दावत ऐसी नहीं होती है. उसमें तो भाई अगर किसी को कुछ इस्तेमाल भी करना रहता है उसमें भी चाइना से चलाते हैं. आई मीन खाने के लिए लगा था तो मैंने नहीं खाया. अच्छा आपने नहीं खाया? तो अच्छा आपने क्यों नहीं खाया फिर? भूख नहीं थी सर. अच्छा भूख नहीं थी, चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं. चलिए ट्राई दिस वन गाइस. इसमें मोल्टेन है आपके पास, मोल्टेन CaCl2 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. चलिए ठीक है, जरा इसको कीजिए, स्टेप वाइज कीजिएगा, ठीक है, ताकि गलती ना हो, है ना? यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द स्पीड राइट नाउ. आपको बिल्कुल आराम से हम देंगे 5 मिनट करने के लिए ना. 5 मिनट इज मोर देन इनफ. तो सारे सी वॉट एवर स्टेप्स आई हैव रिटन नाउ यू विल राइट इट एज इट इज, ठीक है? वैसे देखिए बिल्कुल हम इसको यहाँ देते हैं CaCl2 विद PT इलेक्ट्रोड है. जैसे हमने किया बिल्कुल वैसे आप करने की कोशिश कीजिए, स्पीड खुद ब खुद आ जाएगी आपके पास, ठीक है? अभी ट्राई कीजिए सही हो आंसर. चलिए you guys have 5 minutes.
Okay, guys, start sending your answers. Okay. Very good. Correct, Sakia. Very good. Guys, please send your answers, whatever you have done till now. 5 minutes से ऊपर हो गए हैं. Yes, Fia, Yusuf, Deborah. अच्छा, Yusuf का आंसर. Sir, actually in middle I couldn't hear, sir. Like my network went very low. I just rejoined another device. अच्छा, ठीक है, ठीक है. I will explain it once again. Okay, don't worry. Okay, sir. ठीक है. हाँ, यूसुफ आपका प्रोडक्ट सही है, ठीक है ना. भले ही आपने अंदर में गलती की है, बट वो आपके पुराने गुनाह है, जिसका अच्छा सेम थिंग इज डन बाय डेबोरा. ठीक है, जैसे कि see the mistake that you guys have done is calcium chloride is going to dissociate into calcium 2 positive and 2Cl negative and 2Cl negative. ठीक है, 2 positive होगा यहाँ पे डेबोरा एंड यूसुफ. ठीक है. सो बट अगेन द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी करेक्ट. तो आपको बहुत आपके अगर मार्क्स मिलने होंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना. मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं जनरली इन सब केसेस में. At cathode, what will happen? Calcium 2 positive will eat up 2 electrons and give you calcium solid. At anode,
2Cl negative will give you Cl2 gas plus 2 electrons. ठीक है, so we can write product में products क्या मिल रहे हैं आपको? Products we are getting calcium in cathode and Cl2 gas in anode. ठीक है, तो आप लोग का ये चीज सही है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट प्रोडक्ट्स आर दीस एंड दीस. ठीक है, जनरली जो बोर्ड्स में सवाल आते हैं उसी तरह से आते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर दीस थिंग्स. ओके, अगला है आपका जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस ना, थर्ड लिखेंगे. अच्छा, इफ यू हैव नॉट रिटन गाइस, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. 5 4 3 2 1 and 0. ठीक है, ध्यान दीजिए जरा. नाउ third case is if you are having aqueous NaCl solution with platinum electrode. ठीक है. Now in this NaCl solution, the chemical species that we are going to have will be predominantly sodium positive होगा आपके पास. We will have Cl negative. We will have water molecules also present. Correct है ना? Because it is aqueous. Yes or no? Please tell me guys. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ध्यान दीजिए. Now the possible reactions at cathode. So there are two possibilities यहाँ पे. Either the sodium positive will eat up electrons and get sodium solid. लेकिन H2O के अंदर H+ होता है, भले ही वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ना हो, बट the H2O can also eat up electrons and हाइड्रोजन. जब देखिए बहुत आसान है, रिड्यूस होगा तो रिड्यूस को आप एसोसिएट कर सकते हैं हाइड्रोजन से, इट विल गिव यू H2, it will give you H2 gas plus 2OH negative. If you balance this, it will give you 2 and 2. इस अगर रिएक्शन में आपको प्रॉब्लम है तो देखिए हम बताते हैं कैसे हो रहा रिएक्शन. रिएक्शन याद तो आपको यही रखना है, ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर दिस रिएक्शन इटसेल्फ बिकॉज वाटर इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट व्हेनेवर यू आर हैविंग एक्वस सॉल्यूशन. वाटर में इफ यू टॉक अबाउट वाटर, देन H+ एंड OH नेगेटिव आयंस आर नॉट वेरी मच, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं वहां पे, राइट. H+ कितना होता है? 10⁻⁻7. दैट मींस अगर आप 10⁻⁻7 का मतलब समझ रहे हैं, मतलब होता है 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7. So if you have this many molecules of water, उसमें से you will have 1 H+ ion. So it is very less, right? If I am having this many water molecules, उसमें से एक H+ निकलेगा. So predominantly we have what? H2O only. But in order to understand, I can start with H+. हम मान के चलते हैं कि H+ का रिडक्शन हो रहा है, तो आपको लिखना नहीं है, ध्यान दीजिएगा सिर्फ. H+ when it will get reduced, it will give you what? H+ से इलेक्ट्रॉन डालिए, आपको मिलेगा H2 गैस. ठीक है. अब if you are going to balance this, you will write it 2H positive. सही है, 2H positive. अरे भाई हाँ या ना बोलो, सही है. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ध्यान दीजिए. अब 2H positive है आपके पास. What you are having 2H positive. तो इसके लिए आप क्या जोड़िएगा? You will have 2OH negative साथ में भी ना. H+ कहां से आएगा? जब तक OH negative नहीं है तो H+ आएगा क्या? नहीं आएगा ना. 2OH negative. यहां भी आप क्या जोड़ दीजिए? 2OH negative. And when you have added 2H negative, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 2H+ plus 2OH negative दे देगा आपको 2H2O, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2H+ है, H2 और OH negative बन गया. क्लियर है गाइस? सुनो, ये 2H+ Yes, आएगा कहाँ? पानी से ही आएगा. और अगर पानी से आ रहा है तो पानी के साथ में क्या रखेगा? पानी will have OH negative also. बात समझ में आई? अरे बोलो Yes, भाई. sir. ठीक है. सो बेसिकली रिएक्शन यही होगा आपका वाटर वाला. ठीक है, ध्यान दीजिए. No. Sir, at least can you show me the overall reaction like from the first? I did not write. नहीं, वो लिखना भी नहीं है. वो जब लिखना नहीं है तो क्यों लिखेगा आप? ध्यान दीजिए. SRP for this reaction Na positive to Na, SRP is -2.71, -2.71 volts, and SRP for this reaction it is given as -0.83 volts. ठीक है, बताइए which will be preferred? कौन सा ज्यादा है?
whose SRP is higher, सोडियम वाले का या पानी का? SRP किसकी ज्यादा है? वाटर से। Water's SRP is greater, right? So this reaction will be preferred. Correct है? Yes. At cathode we will be getting what? H2. Also, if you see the difference is significant, right? Yes or no? Yes, sir. Acid phosphorus. Yes, sir. Similarly, if you talk about possible reaction at anode, तो यहाँ पे दो reaction है. We have Cl negative, which is going to give you, as we have seen, 2 Cl negative कर लीजिए, आपको देगा Cl2 gas. It will give you Cl2 gas plus 2 electron. This has a SRP of, लिखिएगा -1.36 वोल्ट लिखिएगा, मतलब सॉरी लिखना नहीं है. एंड सिमिलरली वाटर विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो ऑक्सीडाइज से बनेगा ऑक्सीजन प्लस यू विल हैव 4H पॉजिटिव प्लस यू विल हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ध्यान दीजिए. सो फॉर दिस द SRP इज गिवन एज -1.36 वोल्ट्स. ठीक है, अब आप खुद बताइए, दिस इज वेरी कंपेरेबल ना? हाँ या ना? ओह भाई 1.36, माय बैड, दिस इज 1.34, मेरा गलती, माय बैड, 1.34. ठीक है. अच्छा, इफ आई जस्ट लुक एट द SRP ना, SRP यहाँ पे क्या रहना चाहिए? जिसका लोअर हो, वॉट एवर इज लोअर दैट विल बी. कुछ हमने गलत लिखा है, एक सेकंड गाइस, दिस इज आई थिंक 23 होता है, माय बैड, दिस इज 1.23 नॉट 34. हाँ ठीक है, तो किसका लोअर है? टेल मी हुज SRP इज लोअर? क्लोरीन. Chlorine. SRP हमने सही लिखा है, SRP हमने शायद गलत लिख दिया है, एक सेकंड, सॉरी गाइस. प्लस साइन होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ Cl नेगेटिव आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा. ठीक है, हाँ अब बताइए, सॉरी गाइस. हाँ, 2 बार हमने मिस्टेक कर दिया, आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा भूल जाए, है ना? वो मैन इन ब्लैक के जैसा होता है ना, थोड़ा सा आप लोग 5 सेकंड भूलेंगे प्लीज. ठीक है, अब बताइए जरा, विच इज लोअर SRP, क्लोरीन का या पानी का? पानी का. वाटर से। Water. पानी का SRP क्या है? Lower. लोअर. पानी का SRP लोअर है, तो विच रिएक्शन विल बी प्रेफर्ड? Water. पानी वाला प्रेफर होगा, Water, sir. वाटर विल बी प्रेफर्ड. बट यहाँ पे क्योंकि 1.36 1.23 फर्क, ऑलमोस्ट 0.13 ऐसे का फर्क है, बहुत कम. इस वजह से क्या होता है, आपका साइज कम्स इनटू प्ले. पहले वाले केस में फर्क बहुत ज्यादा था, तो साइज उतना वहां पे नहीं आया. बट इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द साइज विल कम इनटू प्ले. तो अब बताइए, साइज छोटा किसका है, Cl का या पानी का? Cl. Cl का. ठीक है, सो Cl is going to be preferred even though it has higher SRP. अच्छा नहीं, वाटर के केस में क्या होता है, इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज वाटर आपको एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगाना पड़ता है. यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा पोटेंशियल टू अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड. ये जो आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसका, the SOP will be equal to -1.23 volts, right? So ये 1.23 volts is required to oxidize water, but when oxygen is present at the electrode, सही है. But in order to attract the oxygen, in order to attract the water molecules towards the electrode, we have to put extra potential. ठीक है, तो वो यहाँ पे दर्शक नहीं आ रहा नजर में SRP और SOP में. That is why what happens, Cl negative आपको जो दिख रहा है यहाँ पे 1.23, that is not the actual voltage required for the oxidation of water, because water needs extra potential to get attracted and come towards the electrode. ठीक है, इस वजह से क्या होता है, Cl negative because of its smaller size, it quickly comes to the electrode and gets oxidized. यहाँ पे हम एक और चीज लाइन 1-2 लिख दे रहे हैं. Please see the formation of O2 in anode is slow. This slowness leads to the need of greater potential
greater potential than E naught. This extra potential required is called over voltage. Therefore, Cl negative is preferred at anode and Cl2 gas formed. ठीक है, तो प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे? Products will be H2 gas at anode, नहीं cathode में ना, sorry, H2 gas at cathode and Cl2 gas at anode. चलिए, please copy this down. Raise your hand once you are done. अच्छा, एक बात बताइए गाइस, अभी नेक्स्ट वीक छुट्टी नहीं है आप लोग में से किसी की भी? दशहरा का छुट्टी नहीं मिलता है कहीं भी? नेक्स्ट वीक हॉलिडे नहीं है? एक दिन भी छुट्टी नहीं है? नवरात्रि, दशहरा, कुछ नहीं? नो सर। अरे तो मुश्किल वाली बात है भाई। Raise your hand once you're done writing. Yusuf is done. Guys, please raise your hand once you're done. Lisa, Deborah, Fia, and Safia.
भाई लिखा नहीं आते फिया आर यू डन फिया Yes, sir. 1 minute, sir. Yes, sir. Yes, sir. Last word. जल्दी लिखिए जल्दी Yes, sir. Done. Done. ओके राइट नेक्स्ट गाइस लास्ट है ठीक है ना थोड़ा ज्यादा टाइम लग जा रहा है लास्ट लेकिन ठीक है लास्ट इन द सेंस आज की क्लास लास्ट है इसके बाद भी हम लोग को 2-3 देखना है आई हैव टू एटलीस्ट कंप्लीट जहां तक आपका असेसमेंट जो है उसमें आ रहा है ना सो राइट हियर नेक्स्ट लिखेंगे कितना नंबर हो जाएगा ये दिस विल बी थर्ड एंड फोर्थ ना 2-3 और बचेगा फिर aqueous H2SO4 with platinum electrode ठीक है with platinum electrode so the species that will be having species में क्या क्या होगा आपके पास H2SO4 will dissociate into H plus and SO4 2 negative and aqueous है so you will be having water so if I talk about cathode then the possible reaction will be H plus plus electron giving you H2 ठीक है so balance it right H2 gas if I talk about water तो water भी आपके पास क्या करता है water eats up 2 electron gives hydrogen gas plus 2 OH negative so no matter what we are taking as the preferred reaction either you can take both the things ना H plus लो चाहे आप H2 लो दोनों ही के केस में क्या मिल रहा है आपको what is the product that we are getting what is the product H2 gas. H2 gas तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना we don't have to even look which is preferred ठीक है एनोड के केस में देखिए जरा एनोड में एक तो आपके पास पता है एनोड में व्हाट विल हैपन देखिए या तो H2O होगा या तो फिर SO4 2 नेगेटिव सो इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट अगर आपके पास सॉल्यूशन क्या है इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट देन द वाटर रिएक्शन विल टेक प्लेस 2H2O will give you O2 plus 4 electron and 4H plus ठीक है आपको ये समझ में आ रहा है ना SO4 2 नेगेटिव इज वेरी लार्ज अब इसका जो भी हो whatever the SRP जितना भी कम हो जाए but SO4 2 negative is so large that it will not be able to reach the electrode easily that is why if it is dilute solution तो water preferred होगा but if you have concentrated H2SO4 if you have concentrated then in that case SO4 2 negative because now SO4 2 negative is already very concentrated it will be available at the electrode SO4 2 negative will be heavily available at the electrode so आपको लाने की जरूरत नहीं है मूवमेंट का यहाँ पे बात ही नहीं आएगा there will be no questions of movement and mobility and who is fast because when it is concentrated it will be already present in the electrode so SO4 2 negative will be oxidized it will get converted into S2O8 and 2 negative plus 2 electron and this S2O8 2 negative this further reacts with the hydrogen H positives present and it makes H2 S2O8 which is known as peroxo disulfuric acid disulfuric acid ठीक है तो ध्यान रखिएगा if I talk about the products then dilute के केस में if you have dilute H2SO4 then we will say H2 gas at cathode and O2 at anode पर अगर आपके पास कौन H2SO4 हो then in that case H2 gas तो प्रेफर होगा ही होगा in both the cases at cathode एंड एनोड की अगर हम बात करें तो दो रिएक्शन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं S2O8 2 नेगेटिव और H2S2O8 एट एनोड ठीक है चलिए सो दिस इज एनफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज द असेसमेंट दैट यू हैव टुडे कुछ
एक दो और बचे हैं मेनली, एक आपको प्रैक्टिस करने के लिए और एक एक्टिव इलेक्ट्रोड वाला, दैट वी विल डू इन मंडेज क्लास। यार अगले वीक यार किसी दिन छुट्टी करो यार तुम लोग, मेरे साथ मसला हो जाएगा थोड़ा, अगर किसी दिन छुट्टी करेंगे तो सुबह हम क्लास ले लेंगे। How many of you are having Saturday off? How many of you are having Saturday off? Saturday. Aliza is having. हाँ Aliza का तो सब दिन छुट्टी है भाई। डेबोरा, टिया, सफिया एंड यूसुफ। Saturday off है सबका? डेबोरा, your Saturday is off? Sir, for me, Saturday is off, sir. Off for you also ना, ठीक है। तो सैटरडे को आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास हम लेंगे, ठीक है ना? ओके। I'll just note this down. Yes, sir, but please don't keep it on Friday, sir. नहीं फ्राइडे नहीं रखेंगे क्योंकि फ्राइडे को तो एग्जाम होगा ना आपका इस बार। Yeah, and Friday I have class, so I couldn't